Morning all. Today we'll be discussing about cellular injury. As we discussed, we have the stages of cellular response to stress and injury stimuli. We have got a cell जब वो normal अपना जैसे काम कर रहा है वैसे करता है तो वो normal equilibrium में होता है तो हम उसको ये homeostasis बोलते हैं. Whenever there is a stress, reversible जिससे हो सके condition, तो हमारी सेल जो है वो अडाप्ट करती है and it is known as cellular adaptation. अगर वो अडाप्ट ना कर पाए या फिर स्टिमुलस जो बहुत इंजूरियस हो तो सेल इंजरी होता है. अगर ये इंजरी जो है माइल्ड है और ट्रांजिएंट है तो इट इज रिवर्सिबल सेल इंजरी. अगर सिवियर है और प्रोग्रेसिव है तो इट इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी. जब भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है it will lead to cell death obviously. Again there are two types of cell death. It can be necrosis and it can be apoptosis. So when we talk about necrosis is always accidental cell death. हमेशा उसके आसपास इन्फ्लेमेशन होता है. It is always pathological. जबकि जो apoptosis होता है that is the physiological as well as pathological. Apoptosis is what is known as programmed cell death. हर बार program होती है. It is not accidental in nature. Now we come of causes of cell injury. The various causes of cell injury क्या क्या हो सकते हैं? The most important is hypoxia, oxygen deprivation. Oxygen deprivation या hypoxia is a deficiency of oxygen which causes cell injury by reducing aerobic oxidative respiration. Causes of hypoxia include reduced blood flow or ischemia, inadequate oxygenation of the blood due to cardiorespiratory failure, decreased oxygen carrying capacity of the blood as in anemia or carbon monoxide poisoning and severe blood loss. So whatever the cause, oxygenation proper नहीं हुआ है, cardiorespiratory failure है या फिर oxygen carrying capacity कम हो गई है और depending on the severity of the hypoxic state, cells may adapt, undergo injury or death. So number one was oxygen deprivation. Again, it can be due to physical agents, due to chemical agents, infectious agents, immunological reactions, genetic abnormality and nutritional imbalance. तो physical agents में हमारे radiation injury हो सकता है most importantly. Chemical agents में हमारे दोनों टाइप के जो chemicals होते हैं, organic chemicals and inorganic chemicals. Drugs, medicines are also included here. We can have infectious agents, biological, जिसको हम biological injury को तो infectious agent बोलते हैं. It can be because of bacteria, virus or fungi. It can be due to immunological reactions, जो autoimmune या hypersensitivity disorders होते हैं. It can be due to genetic abnormality and it can be due to nutritional imbalances. The progression of cell injury and cell death. All stresses and noxious influences exert their effects first at the molecular or the biochemical level. There is always a time lag between the stress and morphological changes of cell injury or death. With histochemical, ultrastructural, or biochemical techniques, changes may be seen in minutes to hours after injury, whereas changes visible by light microscopy or the naked eye may take considerably longer, hours or days to appear. Within limits, the cell can repair the alterations as seen with reversible cell injury. अगर persistent है या excessive injury है, it causes cells into point of no return to irreversible cell injury and cell death. What it's trying to say कि obviously reversible irreversible वाली बात है. Most importantly, सबसे पहले जो changes होते हैं वो हमेशा molecular या biochemical level पे होते हैं और आगे microscopically grossly उसको देखने के लिए पेस लगते हैं. Which is a time lag. As the name यहाँ पे effect है और यहाँ पे duration of injury है. जैसे जैसे duration बढ़ रहा है देखो सेल फंक्शन का इफेक्ट तो यहाँ पे कम होता जा रहा है. पहले हमको बायोकेमिकल इफेक्ट दिखे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंज दिखे, फिर माइक्रोस्कोपी एंड फाइनली क्रॉस चेंज. तो ये देखिए हमको बाद में दिखते हैं. सेल फंक्शन पहले से ही डिटोरिएट होने लगता है. What it is saying is sequential development of biochemical and morphological changes in cell injury. Cell may become rapidly non-functional after the onset of injury, although they may still be viable.
potentially reversible damage. Longer duration of injury may lead to irreversible damage. Have a look over here. यहाँ तक तो वापस आ सकता है, but once it has gone down, it is irreversible cell injury. A longer duration of injury may lead to irreversible damage and cell death. Note that irreversible biochemical alterations may cause cell death. Typically, these precedes ultrastructural, light and gross microscopic and morphological changes. पहले डेथ हो चुकी है, इंजरी हुई है, डेथ हुई है, चेंजेस हमको कई बार मिले. इसका एक एग्जांपल है मायोकार्डियल इंफार्क्शन. रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करते हैं. Reversible cell injury is characterized by functional and structural alterations in the stages or milder forms of injury. Correctable if the damaging stimulus is removed. It is reversible, which is correctable if the damaging stimulus is removed. Two features are consistently seen in reversibly injured cells. Early alterations in reversible cell injury include generalized swelling of the cell and its organelles, blebbing of the plasma membrane, detachment of the ribosomes from the endoplasmic reticulum, and clumping of nuclear chromatin. Fatty changes occurs in organs that are actively involved in lipid metabolism. So, ये जो भी है ये reversible है, correctable है. दो features are consistently seen in reversibly injured cells. Some most early alteration क्या है? Generalized swelling of the cell and its organelles, blebbing of the plasma membrane, detachment of the ribosomes from the endoplasmic reticulum, and clumping of nuclear chromatin. जहाँ जहाँ lipid metabolism हो रहा है वहाँ पे fatty changes मिलते हैं. Morphology जैसे मैं बात किया, सबसे पहले आपको क्या मिलता है? Cellular swelling. Cellular swelling is the earliest manifestation. Causes pallor, increased turgor इसमें pressure बढ़ जाता है, and increased weight of the affected organ. On microscopic examination, small clear vacuoles may be seen within the cytoplasm. Now, what are these vacuoles? These vacuoles represent distended and pinched off segments of the ER. That means rough endoplasmic reticulum पे जो ribosomes चिपके होते हैं. So, cellular swelling is the earliest manifestation, causes pallor, turgor, and increased weight. Microscopic में small clear vacuoles दिखते हैं, which represent distended and pinched off segments of the ER. This pattern obviously जब cell swell कर गया है, it is known as hydropic degeneration or vacuolar degeneration. This pattern of non-lethal injury is sometimes called as hydropic change or vacuolar degeneration. The cytoplasm of the injured cells appears red, eosinophilic when stained with hematoxylin and eosinophils due to the loss of RNA which binds the blue hematoxylin dye. जो RNA होता है वो ब्लू hematoxylin dye को बाइंड करता है. Now nothing is asked, वो बाइंडिंग करने के लिए कुछ नहीं बचा है, ये तो ब्लू नहीं हो पाता है, वो रेड कलर का होता है. जितना ज्यादा तुम्हारा सेल डेथ की तरफ प्रोसीड करेगा वो उतना ज्यादा eosinophilia सेल में आएगा. The eosinophilia becomes more pronounced with progression towards necrosis. So ultramicroscopic ultrastructural changes की अगर हम बात करते हैं, reversible cell injury which is visible by electron microscopy में क्या क्या होता है? सबसे पहले हमने जैसे बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होने लगती है, इसमें ऑल्टरेशन आते हैं, ब्लेबिंग हो जाएगी, ब्लंटिंग हो जाएगी, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई हो जाएगी. तो अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस और रिवर्सिबल सेल इंजरी visible by electron microscopy include the following: plasma membrane alterations such as blebbing, blunting, and loss of microvilli, mitochondrial changes including swelling and the appearance of small amorphous densities. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही स्वेल होता है और स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज आती हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की. So now what happens is accumulation of myelin figures in the cytosol. What are these myelin figures composed of? Phospholipids derived from damaged cellular membranes. Right? Fourth point is dilation of the endoplasmic reticulum. तो हमारे राइबोसोम्स का डिटैचमेंट होने लगता है. न्यूक्लियर ऑल्टरेशंस विद डिसएग्रीगेशन ऑफ ग्रैनुलर एंड फिब्रिल एलिमेंट्स. कोई भी चीज स्वेल होती है तो उसके जो डिटैचमेंट्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑल्टरेशन हो रहा है, ब्लबिंग, ब्लंटिंग एंड लॉस ऑफ माइक्रोविलाई. Mitochondrial changes जिसमें swelling हो रही है, appearance of small amorphous densities, accumulation of myelin figures हो रहा है cytosol में, which is composed of phospholipids,
which are derived from damaged cellular membranes, dilation of the ER with detachment of the polysomes, nuclear alterations with disaggregation of granular and fibrillar elements. Now, so हम जो बात करते हैं एग्जांपल लेके नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, ये भी फिर से आएगा, बट स्टिल यहाँ पे रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है तो ER है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनकी स्वेलिंग होने लगेगी. ठीक है, ये है मेम्ब्रेन के ब्लिप्स. इंजरी बढ़ रही है, माइलिन फिगर्स क्या थे? फॉस्फोलिपिड का अक्युमुलेशन थे सेलर मेम्ब्रेन से. ब्रेकडाउन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, लीकेज ऑफ कंटेंट्स, माइलिन फिगर्स आते हैं. यहाँ पे एमॉर्फस डेंसिटीज आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इन्फ्लेमेशन होता है, नेक्रोसिस. जबकि एपोप्टोसिस में क्या होता है? क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होने लगता है. मेम्ब्रेन के ब्लेब कभी भी रहेंगे, लेकिन जो भी है दैट इज हैपनिंग इज सेलर फ्रैगमेंटेशन. तो यहाँ पे जो भी ब्लेब्स हैं उसमें ये ऐसे एपोप्टोटिक बॉडीज के फॉर्म में ब्लेब्स बने रहते हैं, मतलब तुम्हारा सेलर कंटेंट उस मेम्ब्रेन के अंदर पे आता है. नाउ नथिंग इज लीकिंग आउट, तो उस वजह से कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है. ऐसे हुआ एपोप्टोटिक बॉडीज बनी, जैसे एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है सिग्नल चला जाता है, फेगोसाइटोसिस होता है और विदाउट इन्फ्लेमेशन डैमेज होता है. दिस इज कंप्लीट प्रोग्राम सेल डेथ. So what is happening? देखो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात करें, ये नॉर्मल है ना. अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे देखो, अर्ली इस्चेमिक इंजरी हो रही है, थोड़े थोड़े सरफेस ब्लेब्स आने लगे हैं, है ना. यूस्ट्रोफिलिया बढ़ने लगा है थोड़ा थोड़ा, राइट. यूस्ट्रोफिलिया बढ़ रहा है और कहीं कहीं सेल की स्वेलिंग दिखाई दे रही है. यहाँ पे अगर हम देखें नेक्रोसिस हो चुकी है, न्यूक्लियर समझ में नहीं आ रहे हैं, सेल का फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, कंटेंट्स हमारे लीक आउट हो रहे हैं. So this is an example of reversible cell injury and irreversible cell injury leading to death. अब हम आते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी की बात करते हैं. अगर तो मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी की जब बात करते हैं, the molecular alterations that lead to cell injury are complex, but several principles are relevant to most forms of cell injury. कैसे कैसे किस पे डिपेंड करता है जो भी सेलर इंजरी हो रही है? The cellular response to injurious stimuli depends on the nature of the injury, its duration and its severity. Nature, duration and its severity. The consequence of the cell injury depend on the type, state and adaptability of the injured cell. जो injurious agent आ रहा है वो कितना potent है ना, और कितनी देर के लिए रह रहा है, कितना severe है, इस पे भी तो डिपेंड करेगा. जो जिस सेल पे इफेक्ट कर रहा है उसका अपना इम्यूनिटी वी कैन से, अडैप्टेबिलिटी कैसा है, उसका स्टेट कैसा है, टाइप कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, डिमांड्स कैसी हैं, राइट. उतनी सी इंजरी पे कार्डियक मसल पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू डिस्टल लेवल पे. तो and any injurious stimulus may simultaneously trigger multiple interconnected mechanisms that damage cells. General mechanisms of cell injury and intracellular targets of injurious stimuli की अगर हम बात करें, the principal targets obviously जहाँ cellular respiration हो रहा है, जहाँ division हो रहा है, ये दो तीन चीजें हैं जहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ता है. The principal targets of injurious stimuli are mitochondria, cell membranes, machinery of protein synthesis and secretion, and DNA. तो क्या चार चीजें हैं? Cell membrane, including the membrane of the organelles, mitochondria, राइबोसोम्स एंड ER एंड DNA. ये चार चीजों पे फर्क आता है सबसे ज्यादा, ये मेन टारगेट्स होते हैं. वी स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज. माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की जब बात करते हैं, दीज आर क्रिटिकल प्लेयर्स बिकॉज वी नो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर क्रिटिकल प्लेयर्स इन ऑल पाथवेज लीडिंग टू सेल इंजरी एंड सेल डेथ. Mitochondria supply life-sustaining energy by producing ATP, but are also targets of many injurious stimuli. Mitochondria can be damaged by increases of cytosolic calcium, reactive oxygen species, and oxygen deprivation, which makes them sensitive to virtually all types of injurious stimuli, including hypoxia and toxins. So they can be damaged by increase of cytosolic calcium, ROS, oxygen. तीन मेजर चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज पे. जब भी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है, व्हाट आर द थ्री मेन थिंग्स दैट इज हैपनिंग? नंबर 1 इज एटीपी डिप्रेशन. सेल रेस्पिरेशन की साइट है वो, तो ऑब्वियसली वहां पे प्रॉब्लम हुआ है तो एटीपी सिंथेसिस में प्रॉब्लम होएगा. एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है? मेजर पाथवे इन मेमेलियन सेल्स
particularly non-dividing brain and liver, is oxidative phosphorylation of ADP in a reaction that results in reduction of oxygen by the mitochondrial electron transport system. Second is the glycolytic pathway, which can generate ATP, albeit in very smaller amounts in the absence of oxygen. अब पता है ना, कोई नहीं है तो लैक्टिक एसिड वाला पाथवे है तो क्रेब्स साइकिल की तरफ जाता है तो मतलब एरोबिक और एनारोबिक की जब हम बात करते हैं तो मेजर पाथवे था वो था हमारा माइटोकॉन्ड्रियल ईटिंग, सेकंड था हमारा ग्लाइकोलाइसिस. In addition to mitochondrial damage, the major causes of ATP depletion are reduced supply of oxygen and nutrients because of ischemia and hypoxia and some toxins. ATP depletion करते हैं. Mitochondrial damage often results in the formation of high conductance channel in the mitochondrial membrane. एक पोर जैसा बन जाता है, पोर माने की छेद. तो जब भी डैमेज होता है तो एक हाई कंडक्टेंस चैनल बनता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर. This leads to the loss of mitochondrial membrane potential, resulting in failure of oxidative phosphorylation and progressive ATP depletion that culminates in necrosis. क्या क्या हो रहा है? Loss of जैसे पोर खुला mitochondrial membrane potential का loss हो गया, resulting in failure of oxidative phosphorylation and progressive ATP depletion that culminates in its necrosis. High energy phosphate in the form of ATP is required for virtually all synthetic and degradative processes within the cell, which include membrane transport, protein synthesis, lipogenesis, and deacylation, reacylation reactions necessary for phospholipid turnover. Hence, depletion of ATP to 5 to 10% of normal levels has widespread effects on many critical cellular systems. क्योंकि ATP सब जगह चाहिए. Now, the activity of the plasma membrane energy dependent sodium pump भी reduce हो जाता है. Now, whenever ये वाला sodium potassium ATPase वाला reduce होएगा pump, तो failure of this active transport system causes sodium to enter and accumulate inside cells and potassium concentration to fall. The net solute gain results in osmotically driven water accumulation, again with cell swelling and dilatation होगा. तो क्या होएगा? सोडियम आएगा, पोटेशियम बाहर रहेगा. सोडियम अंदर रहेगा तो सोडियम रहेगा तो पानी भी आएगा. ऑस्मोसिस, सोडियम में पानी आएगा, दैट लीड्स टू सेल स्वेलिंग एंड ईयर डायलेशन. और क्या क्या हो सकता है? सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो जाएगी. इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स इज रिड्यूस्ड एज इन इस्चीमिया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ceases, resulting in a decrease in cellular ATP and associated increase in AMP, adenosine monophosphate. These changes stimulate phosphorylase and phosphofructokinase activities, leading to increased rates of glycogenolysis and glycolysis, respectively, in an effort to maintain energy supplies by generating ATP. As a consequence, to glycogen stores and they are also depleted. Glycolysis under anaerobic conditions result in the accumulation of lactic acid and inorganic phosphates from the hydrolysis of phosphate esters, which reduces the intracellular pH, resulting in decreased activity of many cytosolic enzymes. With prolonged or worsening depletion of ATP, a structural disruption of the protein synthetic apparatus occurs, manifest as detachment of ribosomes from the graph yard and the dissociation of polysomes with a consequent reduction in protein synthesis. There may also be increased protein misfolding with injurious effects. Ultimately, there is irreversible damage to mitochondrial and lysosomal membranes and the cell undergoes necrosis. हमने जहाँ पे ATP depletion पढ़ा था mitochondria की वजह से, the second thing what is happening is mitochondrial damage है तो oxidative phosphorylation पूरा नहीं होगा. तो incomplete oxidative phosphorylation also leads to formation of ROH, reactive oxygen species, which have many deleterious effects. Third thing है
आप ध्यान देना माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर स्टोर रहते हैं. देयर इज ऑलवेज प्रो एपोप्टोटिक. कोई भी चीज प्रो होता है एंटी होता है. प्रो जो उस चीज को सपोर्ट करे, एंटी जो उस चीज के अगेंस्ट में जाए. तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स लीक हुए, चैनल बने, तो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स बैक्स और बैक जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं. जैसे लीक होते हैं तो एपोप्टोसिस थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे का इनिशिएशन हो जाता है. This action of backs and back is specific to mitochondrial membranes and leads to damage of other organelles indirectly. So, necrosis हर बार हम हर दो में डिवाइड कर रहे हैं. अगर ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस है, टॉक्सिन्स है, रेडिएशन है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हुआ. तीन तरीके से हम लोगों ने देख लिया. इनकम्प्लीट एटीपी वाला, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला एंड प्रोटीन्स का लीकेज वाला. तो ये सब हो रहा है एब्नॉर्मलिटीज, नेक्रोसिस. एक तो ये है ही है. अगर इसी के साथ साथ प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स का सिंथेसिस भी बढ़ जाए तो एपोप्टोसिस की तरफ गाड़ी चली जाती है. नाउ एक था हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज. हमने पढ़ा तो चार चीज थी: माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, मेम्ब्रेन डैमेज, डीएनए डैमेज. तो मेम्ब्रेन डैमेज की बात करते हैं और राइबोसोम्स वाला. तो मेम्ब्रेन डैमेज, अर्ली लॉस ऑफ सेलेक्टेड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी leading ultimately to overt membrane damage is a consistent feature of most forms of cell injury except apoptosis. Apoptosis में तो cell membrane intact रहता है. Membrane damage may affect the integrity and functions of all the cellular membranes. In ischemic cells, membrane defects may be the result of ATP depletion and calcium-mediated activation of the phospholipases. The plasma membrane can also be damaged directly by bacterial toxins, viral proteins, lytic complement components, and a variety of physical and chemical agents. Membrane damage की बात करें तो क्या क्या biochemical mechanisms, several biochemical mechanisms may contribute to membrane damage. ROS, oxygen-free radicals, causes injury to cell membranes by lipid peroxidation. Decreased phospholipid synthesis. The production of phospholipid in cells may be reduced as a consequence of defective mitochondrial function or hypoxia, both of which decrease ATP production and thus affect energy-dependent biosynthetic pathways. Decreased phospholipid synthesis may affect all cellular membranes, including those of mitochondria. Phospholipid का synthesis कम हो रहा है, breakdown ज़्यादा हो रहा है. तो increased phospholipid breakdown due to activation of calcium-dependent phospholipases by increased cytosolic and mitochondrial calcium. Phospholipid breakdown leads to accumulation of lipid breakdown products, which have a detergent effect on membranes. They may also either insert into the lipid bilayer of the membrane or exchange with membrane phospholipids, potentially causing changes in permeability and electrophysiological alterations. Cytoskeletal abnormalities की बात करते हैं. Cytoskeletal filaments serve as anchors connecting the plasma membranes to the cell interior. Proteases activated by cytosolic calcium may damage these tethers. When exacerbated by cell swelling, particularly in myocardial cells, this damage leads to detachment of the cell membrane from the cytoskeleton, rendering it susceptible to stretching and rupture. Now, damage to different cellular membranes has diverse effects on cell. Mitochondrial membrane damage we have discussed earlier. Damage to membranes resulting opening of membrane, हमारा जो pore खुल रहा था, decreased ATP हो रहा था, and release of pro-apoptotic proteins that trigger the apoptotic death. Damage to different cellular membranes has different effects on the cell. Plasma membrane damage. Plasma membrane damage results in loss of osmotic pressure and influx of fluids and ions, resulting in as well as loss of cellular contents. The cells may also leak metabolites, example glycolytic intermediates, that are vital for the reconstitution of ATP, thus further depleting energy stores. Damage to different cellular membranes with diverse effects on cells. उसी में अगर lysosomal membranes हैं, तो it will result in leakage of their enzymes into the cytoplasm and activation of acid hydrolases in the acidic intracellular pH of the injured cell. These lysosomal hydrolases include RNase, DNase, protease, phosphatase, and glucosidase,
which degrade RNA, DNA, proteins, phosphoproteins, and glycogen respectively, and push the cells into necrosis. This is what is happening. ROS हो रहा है, लिपिड पेरोक्सिडेशन करा रहा है. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी डैमेज हुआ था, तो फॉस्फोलिपिड रीसाइलेशन या सिंथेसिस हो रहा था, फॉस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन हो रहा था, तो दोनों फॉस्फोलिपिड का डिग्रेडेशन हो रहा था. अल्टीमेटली लॉस हो रहा है, लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, साइटोस्केलेटल डैमेज हो रहा है, ओवरऑल लीडिंग टू मेम्ब्रेन डैमेज. अब डीएनए पे डैमेज होता है. Damage to DNA, damage to nuclear DNA activates sensors that trigger P53. हम जब सेल साइकिल की बात करते हैं G1S, G2 and P53 is the guardian genome. जैसे ही कुछ सेल का डैमेज होता है P53 एक्टिवेटेड हो जाता है. DNA damage activates P53, which arrests the cells in the G1 phase of the cell cycle and activates DNA repair mechanisms. If these mechanisms fail to correct the DNA damage, P53 triggers apoptosis by the mitochondrial pathway. So the cell chooses to die rather than survive with abnormal DNA, which has the potential to induce malignant transformations. If P53 is active, it is okay. Otherwise, it will lead to apoptosis. Hypoxia ischemia radiation है. Mitochondria ATP ROS बढ़ गए, cell injury necrosis. उन्हीं की वजह से मेम्ब्रेन का डैमेज हो रहा है. जितने मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, साइटो मतलब ट्रांसपोर्ट फंक्शंस में प्रॉब्लम आएगा, एंजाइम्स लीक होंगे, नेक्रोसिस. रेडिएशन हो रहा है, न्यूक्लियर डैमेज हो रहा है, डीएनए डैमेज हो रहा है. We will try to P53 will try to arrest the cell cycle. Okay, if not, apoptosis हो जाएगा. Now we talk about oxidative stress, accumulation of oxygen-derived free radicals. Cell injury induced by free radicals, particularly ROS, is an important mechanism of cell damage in many pathological conditions. Free radicals are chemical species that have a single unpaired electron in an outer orbit. They're highly reactive and attack and modify adjacent molecules such as inorganic and organic chemicals, proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, many of which are key components of all cell membranes and nuclei. Some of these reactions are autocatalytic, whereby molecules that react with free radicals are themselves converted into free radicals, thus propagating the chain of damage. ROS are produced normally in cells during mitochondrial respiration and energy generation, but they are degraded and removed by intracellular ROS scavengers. Increased production or decreased scavenging may lead to an excess of free radicals, a condition which is known as oxidative stress. Oxidative stress, variety of pathological processes में देखा जाता है, including cell injury, cancer, aging, some degenerative disease such as Alzheimer's disease. ROS are also produced in large amounts by activated leukocytes, particularly neutrophils and macrophages during inflammatory reactions. Now, generation, removal and pathology की बात करते हैं. Reduction oxidation reaction that occur during normal, उनसे बनता है. Absorb कर लिया radiant energy. Rapid bursts of ROS होते हैं inactivated leukocytes during inflammation. Enzymatic होता है, metabolism of exogenous chemicals or drugs can generate free radicals that are not ROS but have similar effects. Transition methods such as iron and copper and nitric oxide. Removal कैसे होता है? Most importantly, antioxidants, vitamin E, A, as well as ascorbic acid and glutathione, free iron and copper. Several enzymes है जैसे catalase होता है, superoxide dismutase होता है, and glutathione peroxidase होता है. इनके इफेक्ट क्या क्या होते हैं? लिपिड पेरोक्सिडेशन कराते हैं ये मेम्ब्रेन्स के, फिर वो मेम्ब्रेन डैमेज कराता है. ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन करा देते हैं प्रोटीन्स का, तो मतलब इनका फिर डिस्ट्रप्शन हो जाता है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो जाती है, या फिर ये डीएनए डैमेज कराते हैं. तो वही चीजें क्या कर रहे थे, कैसे हो रहा था. skip it as of now. Right, तो प्रोडक्शन हो रहा है सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल से. तीन चीज क्या क्या करा रहे थे? लिपिड पेरोक्सिडेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, डीएनए डैमेज. प्रोटीन मॉडिफिकेशन है, मिसफोल्डिंग है, डैमेज हो जाएगा, मेम्ब्रेन डैमेज है या म्यूटेशन है. रिमूवल H2O2 कैसे हो रहा था? सुपर ऑक्साइड डिस्मटेज, ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज एंड कैटालिसिस के थ्रू. तो उसमें दो चीजें और थी जो हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में था जब. तो एक है disturbance in calcium homeostasis. Calcium ions normally serve as second messengers in several signaling pathways,
but if released into the cytoplasm of cells in excessive amounts, they are an important source of cell injury. थर्ड है हमारा एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस, द अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स, जो भी हमने देखा, accumulation of misfolded proteins on the AR can stress adaptive mechanisms and trigger apoptosis. So this is the final picture. Injurious agent, extracellular calcium यहाँ पे आ रहा है. इंजरी में भी माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कभी भी कैल्शियम बढ़ रहा है तो क्या क्या हो रहा है, कैल्शियम बढ़ेगा तो वल्नरेबिलिटी 4 बढ़ जाएगा, फिर से हमारा जो अपॉप्टोसिस वाला था, डिक्रीज एटीपी हो रहा है. फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीज, एंडोन्यूक्लियस, एटीपीएस बढ़ जाएंगे तो फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन, मेम्ब्रेन डैमेज, एंडोन्यूक्लियस बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर डैमेज, एटीपीएस बढ़ रहा है तो डिक्रीज एटीपी. थैंक यू. ओके, एक साइड और है हमारे यहाँ पे, एक साइड और है विच इज टेलिंग व्हाट, नॉर्मल है, चिट्रॉन्स है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है तो वो हट जाएंगे. तो मिसफोल्डिंग प्रोटीन जब भी बढ़ेंगे तो ईआर स्ट्रेस हो जाएगा. प्रोटीन फोल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा उसका प्रोटीन्स मिसफोल्डेड है तो उसका हो जाएगा. अगर अडेप्ट कर लिया तो ठीक, नहीं तो एपोप्टोसिस. अगर अडेप्ट कर लिया है तो ये उसको चेंज कर देता है मैच्योर फोल्डेड प्रोटीन्स में. थैंक यू.